সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি আজি আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'ত মহাদেৱী বৰ্মাজীয়ে লিখা নীলকণ্ঠ পাটৰ মই এক্সপ্লেইন কৰিম। তো মই বিশ্বজিৎ ছাৰ সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আকৌ এবাৰ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি এই পাঠটোত যিবিলাক সৰু ডাঙৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে এই বিষয়ে মই কৈ যাম আৰু পাৰিলে এনসাৰবিলাকো লগতে কৈ যাম। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো খুব মনোযোগেৰে তোমালোকে শুনিবা বুলি মই আশা কৰিছোঁ আৰু স্কিপ নকৰি খুব এটেনশ্যনৰে সৈতে মনোযোগেৰে সৈতে শুনিবা, তোমালোকৰ বহুত কামত আহিব। তো প্ৰথমে মই কবিৰ পৰিচয়টো অলপ আলোচনা কৰি আছোঁ। सन 1907 की होली के दिन उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद में जन्मी महादेवी वर्मा की प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। तेखेतर जन्म হৈছিল 1907 চনত उत्तर प्रदेशर फरुखाबादत और जन्म হৈছিল होलीर दिनत, जिदिना होली खेल है সেইদিনা जन्म হৈছিল और तेखेतर प्रारंभिक शिक्षा माने आरम्भणि शिक्षाটো कत হৈছিল इंदौरत। विवाह के बाद पढ़ाई कुछ अंतराल से फिर शुरू की। বিয়া হোৱাৰ পিছত তেখেতৰ পঢ়া শুনাটো অলপ সময়ৰ কাৰণে হয়তো স্থগিত আছিল, আকৌ আৰম্ভ কৰিছিল। আৰু তোমালোকে নিশ্চয় পাই আহিছা আগৰ অৰ্থাৎ ক্লাছ 9ত যেটো কবিতা আছিল মুৰঝায়া ফুল, তেখেতে লিখিছিল মহাদেৱী বৰ্মাজীয়ে লিখা মুৰঝায়া ফুলটো। তাত কবিৰ পৰিচয় সম্পৰ্কে হয়তো তোমালোকে অৱগত হৈছা। তো ইয়াত वे मिडिल में पूरे प्रांत में प्रथम आई और छात्रवृत्ति भी पाई। यहाँ सिलसिला कोई कक्षाओं तक चला। बौद्ध भिक्षुणी बनना चाहा। महादेवी वर्मा की हब विचारिছিল? बौद्ध भिक्षुणी हब विचारिছিল। प्रश्न আহিব পাৰে महादेवी वर्मा क्या बनना चाहा? तो उत्तर तो हब महादेवी वर्मा बौद्ध भिक्षुणी बनना चाहा। लेकिन महात्मा गांधी के आह्वान पर सामाजिक कार्यों में जुट गई। किंतु महात्मा गांधीर आह्वानत तेखेते सामाजिक कार्यर लगत निजके जुक्त करि लैছিল। उच्च शिक्षा के लिए विदेश न जाकर नारी शिक्षा प्रसार में जुट गई। उच्च शिक्षार कारण विदेशत जोआ एरि दी तेखेते कि करिছিল? नारी शिक्षा प्रचार और प्रसारर बारे निजके खाप खुवाई लैছিল और निजे সেই কামবিলাকত আগভাগ লৈছিল। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और स्वतंत्रता आंदोलनतो আগভাগ লৈছিল। महादेवी ने छायावाद के 4 प्रमुख रचनाकारों में और औरों से भिन्न अपना एक विशिष्ट स्थान बनाया। महादेवी वर्माय छायावाद जुगर जी 4 कवि आसिल সেই 4 रचनाकारों भितरत तेखेतर स्थानটো बेलेगকৈ विशिष्ट स्थान এটা বনাই লৈছিল। इनका समस्त काव्य वेदनामय है। तेखेतर जिमानবিলাক रचना আছে সকলোবিলাক কি वेदनामय। इन्होंने साहित्य के बेजोर गद्य रचनाओं से भी समृद्ध किया है। तेखेते साहित्यर बेलेग धৰণৰ गद्य रचना কৰি साहित्यक समृद्ध কৰিছিল। 11 सितंबर 1987 को उनका देहावसान हुआ। उन्हें साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित प्राय सभी प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने सन 1956 में उन्हें पद्मभूषण अलंकार से अलंकृत किया था। प्रश्न আহিব পাৰে তেখেতক কি পুৰস্কাৰেৰে পুৰস্কৃত কৰা হৈছিল? महादेवी वर्मा जी को किन किन पुरस्कारों से नवाजा गया था? এইটো লিখিব পাৰিবা যে महादेवी वर्मा जी को साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित प्राय सभी प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। साथ ही भारत सरकार ने उन्हें सन 1956 में पद्मभूषण अलंकार से अलंकृत किया था। केवल 8 वर्ष की उम्र में बारहमासा जैसी बेजोर कविता लिखने वाली महादेवी की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं निहार, रश्मि, निर्जा, संध्यागीत, दीपशिखा, प्रथम आयाम, अग्निरेखा, यामा और गद्य रचनाएँ हैं अतीत के चलचित्र श्रृंखला की करिया, स्मृति की रेखाएँ, पथ के साथी, मेरा परिवार और चिंतन के सन। महादेवी की रुचि चित्रकला में भी रही। लिखार उपरिও महादेवी वर्मा चित्रकला तो रुचि राखिছিল। उनके बनाए चित्र उनकी कई कृतियों में प्रयुक्त किए गए। हिंदी गद्य साहित्यों में संस्मरण एवं रेखाचित्रों को बुलंदियों तक पहुंचाने का श्रेय महादेवी जी को है। हिंदी साहित्य संस्मरण लगते रेखाचित्र যিবিলাক আছে এইবিলাক এটা স্থানত লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত महादेवी वर्मार अवदान बहुतो আছে। उनकी रचनाओं में समाज के
शोषित, उपेक्षित व पीड़ित लोगों के प्रति ही नहीं बल्कि मानवेतर प्राणियों के लिए भी उतना ही प्रेम, करुणा व सहिष्णुता दृष्टिगत होती है। मानुहर उपरिও जीव जंतु चराई चिरिकटिर प्रतिও महादेवी बर्मार जितो प्रेम, भालपोआ, मरम, सहिष्णुता आदि आमी देखिबलै पाऊँ। नीलकंठ नामक प्रस्तुत रेखाचित्र में महादेवी वर्मा ने अपने पालतू मोर के मीठे कड़वे अनुभवों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया है। नीलकंठ पाठ्यत महादेवी वर्माई এই যে মৰা চৰাই আছে, মৰা চৰাইৰ যিটো মিঠে কৰবে, মিঠা তিতা যিবিলাক অনুভৱ, সেই অনুভৱবিলাক ইয়াত দাঙি ধৰিছে। লগতে ইয়াত প্ৰশ্ন এটা হ'ব পাৰে, নীলকণ্ঠ কিস বিধা কি লেখ হে, নীলকণ্ঠটো কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰচনা? উত্তৰটো লিখিব লাগিব, नीलकंठ एक रेखा चित्र है। इस पाठ के माध्यम से लेखिका के जीव जंतुओं के प्रति अथाह प्रेम और सहानुभूति का परिचय मिलता है। नीलकंठ सहित उसके सभी साथियों के रूप, स्वभाव, व्यवहार और चेष्टाओं का लेखिका ने जितनी गहनता और सूक्ष्मता से निरीक्षण तथा वर्णन किया है, उससे यह रेखाचित्र अत्यंत जीवित बन गया है। इमान धुनियाকৈ महादेवी वर्माई এইবিলাক प्रस्तुत কৰিছে বা দাঙি ধৰিছে। গল্পটোত পঢ়িলে আমি এনেকুৱা অনুভৱ হ'ব যেন আমি জীৱিত এটা ঘটনা দেখি আছোঁ বা জীৱন্ত এনেকুৱা লাগিব। এতিয়া পাঠটোলৈ আহিছোঁ, नीलकंठ पाठটো। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़िया और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। সিদিনা, उस दिन সিদিনা महादेवी वर्माई কি কৰিছিল, নিজৰ ঘৰত অতিথি আহিছিল, অতিথিসকলক ষ্টেচনত পहुंचाই দি যেতিয়া ঘৰলৈ উভতি আহিছিল বা আহিব ধৰিছিল, তেতিয়া হঠাতে তেখেতৰ মনত আহিল যে মই সেই যিটো খৰগোশ আৰু চৰাই চিৰিকটি বিক্ৰী কৰে সেই দোকানখনলৈ যাব লাগিব। গতিকে ড্ৰাইভাৰজনক ক'লে সেই দোকানখনলৈ যোৱাৰ কাৰণে आदेश दिले বা निर्देश दिले। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुँचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत किया। जेतिया সেই बड़े मियार दुकान, बड़े मियाँ हल जिए चराई चिरिकटिবিলাক बिक्री करे। प्रश्न ইয়াত আহিব পাৰে, बड़े मियाँ कौन है? बड़े मियाँ चिड़िया बेचने वाले दुकानदार है। तो जेतिया সেই দোকানৰ ওচৰত আহিছিল তেতিয়া গাড়ীটো ৰখিবলৈ কৈ, ড্ৰাইভাৰক ৰখিবলৈ কৈ নিজে গাড়ীৰ পৰা नामिसिल। मेरे कोई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। गाड़ी पर नमार लगे लगे महादेवी वर्मा किबा कोৱাৰ আগতে बड़े मियाই কি কৰিলে, सलाम गुरुजी কৈ ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে যে যোৱাবাৰ আপুনি যে আহিছিল মৰা চৰাইৰ কথা মোক কৈ গৈছিল, গতিকে शंकरगढ़ से एक चिड़ीमार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। शंकरगढ़र शिकारी जने 2টা मरा चराइर पोवाली धरी लई आहिছে। एक मोर है, एक मोरनी, एटा मयूर और एटा मयूरी। आप पाल ले, मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। कले जे आपुनी एटो लई जाओक আৰু আপুনি লালন পালন কৰক। ময়ূৰৰ পাঞ্জাৰ পৰা বা ময়ূৰৰ পাখাৰ পৰা কি হয়, ঔষধ তৈয়াৰ হয়। গতিকে বহুতো লোক মৰা চৰাই কিনিবলৈ আহে। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है, मोरो तो अंतरखन মানুহৰে। গতিকে मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूं? গতিকে যিয়ে ঔষধ বনোৱাৰ কাৰণে ল'ব তেওঁ তো মাৰি পেলাব মৰা চৰাইবিলাকক। গতিকে মইতো এজন মানুহ, মোৰতো মানুহৰ অন্তৰ আছে, গতিকে মই তেওঁলোকক কেনেকৈ দিওঁ? टालने के लिए मैंने कह दिया गुरुजी ने मंगवाए हैं। আৰু মই তেওঁলোকক নিদিয়াৰ কাৰণে এই কথাটো কৈ দিছোঁ যে তোমালোকক দিয়া নাযাব, মই মৰা চৰাই 2টা মোৰ গুৰুজীৰ কাৰণেহে ৰাখি দিছোঁ, অৰ্থাৎ মহাদেৱী বৰ্মাজীৰ কাৰণে ৰাখি দিছে। वैसे यह कम वक्त रोजगार ही खराब है, बस पकड़ो पकड़ो मारो मारो। आसलते मानुहर टका इनकाम करा बा रोजगार करार कारणे एनेकुआ बहुते करे।
बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। তোমালোকে চাবা দ্ৰুতগামী ৰেলগাড়ী যিবিলাক আছে থামিবলৈ যিকোনো ষ্টেচন নিশ্চিতকৈ দিয়া থাকে যে ষ্টেচনত থামিব, কিন্তু বড়ে মিয়াৰ যিটো ভাষণ আছিল, ভাষণৰ যিটো তুফান মেল আছিল, ইয়াৰ কাৰণে কোনো নিশ্চিত ষ্টেচন নাছিল, থামিবৰ নামে লোৱা নাছিল। सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे वही स्टेशन मान लिया जाता है। যিয়ে বড়ে মিয়াৰ সন্মুখত থাকি শুনি থাকে তেওঁ যেতিয়া থামিবলৈ কয় तेतियाहे त्याव थामी जाए। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोक कर पूछा, मोर के बच्चे है कहाँ? मैं আগতীয়াকৈ জানো, মহাদেৱী বৰ্মাই কৈছে, মই আগতীয়াকৈ জানো যে বড়ে মিয়াই যেতিয়া ভাষণ দিবলৈ আৰম্ভ কৰে তেতিয়া তেওঁৰ ভাষণ নাথামে, গতিকে মই তেওঁক ৰখিবলৈ বা থামিবলৈ এটা ইংগিত কৰিছোঁ যে ময়ূৰৰ বা মৰা চৰাইৰ পোৱালিবিলাক আছে ক'ত। बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरी तक पहुंची, जिसमें तितरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। और बड़े मियाँ आঙুলিৰে দেখুৱাই দিছিল আৰু মই সেইফালে দৃষ্টিগোচৰ কৰাৰ দেখা পালোঁ সৰু এখন পিঞ্জৰাত এই ঘনচিৰিকাৰ নিচিনা সৰু 2টা পোৱালি বহি আছে। पिंजरे इतना संकीर्ण था कि वे पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जरे चित्र जैसे लग रहे थे। पिंजराखन इमान सरू आसिल जे चराई दुटा जे बहि आछे एनेकुवा जेन देखा गइছিল, जेटा चित्र जीवित নহয় एनेकुवा जेन देखा गइছিল। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। महादेवी बर्मा इफाले चाई आसिल मरा चराइर पोवाली दुटा, किन्तु इफाले बड़े मियार भाषण चलिए आसिल। ईमान कसम गुरुजी, चिड़िया मार ने मुझसे इस मोर के जोरे के नगद 30 रुपये ली है। तेखेते प्रतिज्ञा करिছে বা এনেকৈ কৈছে, ইমান কসম গুৰুজী, মোৰ পৰা চিকাৰীয়ে কিমান টকা লৈছে? 30 টকা লৈছে এই পোৱালি দুটাৰ কাৰণে। बरहा कहा, भाई जरा सोच तो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला? আপুনিয়ে কওকচোন, মহাদেৱী বৰ্মাক কৈছে, আপুনিয়ে কওকচোন এই পোৱালি দুটাৰ ভিতৰত এনেকুৱা কি আছে, ময়ূৰৰ এনেকুৱা কি দেখা গৈ আছে যে যাৰ কাৰণে তুমি ইমান দাম বিচাৰিছা, 30 টকা বিচাৰিছা? पर वो मुझे क्यों सुनने लगा, किंतु তেওঁলোকে मोर कथा क्यों शुनिब? आपका ख्याल करके आस्था पास्ता कर देना ही पड़ा। যেতিয়া আপোনাৰ কথাটো মনত পৰিছে যে আপুনি মৰা চৰাইৰ কথা কৈছিল, গতিকে সেই কথাটো মনত পৰাৰ লগে লগে মই ৰাখি দিছোঁ আৰু 30 টকা তেওঁলোকক দি দিছোঁ। अब आप जो मुनासिब समझे, इतने अपनी जी भाल बुझे সেইটো কৰিব পাৰে। अस्तु 30 चिड़ियामार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के इनाम के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजरा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौखटे का चित्र जीवित हो गया। और যেতিয়া मैं 30 টকা সেই চিকাৰীবিলাকৰ কাৰণে আৰু 5 টকা বড়ে মিয়াৰ কাৰণে ইনাম মানে পুৰস্কাৰৰ স্বৰূপ মই যেতিয়া দিছোঁ, সেই 35 টকা দি যেতিয়া মই সেই পিঞ্জৰাটো গাড়ীত ৰাখিছিলোঁ, তেতিয়া সেই चित्रটো যেন जीवित हो उठिल। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजरा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया था। पोवाली दुटा इमान এনেকুৱা অৱস্থাত আছিল, পিঞ্জৰাটো ইমান সৰু আছিল, যেতিয়া পোৱালি দুটা লৰচৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল তেতিয়া এনেকুৱা যেন অনুভৱ হৈছিল যে চৰাইবিলাকে নুউৰিব, পিঞ্জৰাটোৱে উৰি যাব। घर पहुँचने पर सब कहने लगे तितर है, मोर कहकर ठग लिया है। যেতিয়া মই সেই পোৱালি দুটা ঘৰত লৈ গৈছিলোঁ, তেতিয়া সকলোৱে মোক কৈছিল, ঘৰৰ যিসকল সদস্য আছে সকলোৱে কৈছিল যে এইবিলাক ময়ূৰ নহয়, তোমাক বা আপোনাক বেলেগ চৰাই দি ঠগাই দিছে। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिर जाने की दुर्बलता बन गई है। বহুতবাৰ মই ঠকিছোঁ, গতিকে ঠকাৰ কথাটো মনত অহাৰ লগে লগে মোৰ অন্তৰখন যেন एकदम फाली गल। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुरखाब के पर लगे है तो पक्षी ही। और যেতিয়া সকলে তেনেকুৱা কৈছিল, মহাদেৱী বৰ্মাই হয়তো কৈছিল ময়ূৰৰ পখা কি সোণেৰে বনোৱা হয় বা সোণৰ থাকে নেকি, হয়তো চৰাইয়েই। चिरा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। और সেই অন্তৰখন মোৰ ফালি যোৱাৰ কাৰণে সেই পোৱালি দুটাৰ প্ৰতি মোৰ যত্ন আৰু বাঢ়ি গৈছিল। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर उसका दरवाज़ा खोला, फिर 2 कटोरों में छत्तू की छोटी छोटी गलियाँ और पानी रखा। प्रथमे मैं कि करिছিলোঁ, मोर
লিখা পঢ়া কৰা কোঠাটিলৈ লৈ গৈছিলোঁ পিঞ্জৰাটো, আৰু পিঞ্জৰাৰ দুৱাৰটো খুলি সেই দুটা পোৱালি এৰি দিছিলোঁ। লগতে কি কৰিছিলোঁ, সৰু দুটা বাটিত, এটা বাটিত ছাতুৰে সৰু সৰু টেবলেটৰ নিচিনা গুলি বনাই দি দিছিলোঁ, আৰু এটা বাটিত কি দিছিলোঁ, পানী দিছিলোঁ। ये दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरे से निकलकर कमरे में मानो खो गए। সেই এন্দুৰ ধৰা পিঞ্জৰাৰ যেনেকুৱা থাকে, সৰু পিঞ্জৰাৰ পৰা ওলাই পোৱালি দুটা এনেকুৱা যেন অনুভৱ হৈছিল যে একদম তেওঁলোকে আত্মহাৰা হৈ গৈছিল। कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे, কেতিয়াবা কেতিয়াবা টেবিলৰ তলত গৈছিল, কেতিয়াবা কেতিয়াবা আলমাৰীৰ পাছফালে গৈছিল। अंत में इस लुका छिपी से थक कर उन्होंने मेरे रद्दी कागज़ों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। আৰু খেল ধেমালি যেতিয়া শেষ হৈ গৈছিল তেতিয়া তেওঁলোকে কি কৰি লৈছিল, মহাদেৱী বৰ্মাৰ লিখা পঢ়া কৰা কোঠালিত যিবিলাক অলাগতিয়াল কাগজ পত্ৰৰ বোজা আছিল, সেই তাতে গৈ বহি তেওঁলোকৰ থকাৰ ঠাই বনাই লৈছিল। 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। কেইবাদিনো এনেকুৱা হ'ল, গোটেই দিন ইফালে সিফালে ঘূৰি ফুৰে, আৰু যেতিয়া ৰাতি হয় তেতিয়া সেই অলাগতিয়াল কাগজবিলাকৰ ওপৰত গৈ তেওঁলোক বহি থাকে। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरे मेज़ पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे। আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে আশ্বস্ত হৈ গ'ল যে এইটোৱে আমাৰ ঘৰ, এইটোৱে আমাৰ থকাৰ ঠাই, তেতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিলে, কেতিয়াবা মহাদেৱী বৰ্মাৰ টেবিলৰ ওপৰত, কেতিয়াবা মহাদেৱী বৰ্মাৰ চেয়াৰত বহে, আৰু কেতিয়াবা মহাদেৱী বৰ্মাৰ মূৰৰ ওপৰত গৈও বহে। खिड़कियों में तो जाली लगी थी पर दरवाज़ा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। খিৰিকী যিবিলাক আছে, জানালা যিবিলাক আছে, সেইবিলাকতো জালি লগোৱা আছিল, কিন্তু দৰজাততো জালি কোনেও নলগায়, গতিকে দৰজাটো বন্ধ ৰাখিব লগা হৈছিল মহাদেৱী বৰ্মাৰ। আৰু তাৰ কাৰণটো হৈছে खुला रहने पर चित्रा मेरी बिल्ली इन नवागंतुकों का पता लगा सकती थी, और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता यह अनुमान करना कठिन नहीं है। যেতিয়া এই কাৰণে দুৱাৰখন বন্ধ ৰাখিব লগা হৈছিল যে যেতিয়া মহাদেৱী বৰ্মাই মেকুৰী পুহিছিল, সেই মেকুৰীটোৰ নাম আছিল চিত্ৰা। চিত্ৰাই যদি জানিলেহেঁতেন যে দুটা নতুন ময়ূৰৰ পোৱালি আহিছে, তেতিয়া হয়তো কি কৰিলেহেঁতেন ময়ূৰৰ পোৱালি দুটা, সেইটো অনুমান কৰা কঠিন। वैसे वह चूहे पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो दो सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनधिकार चेष्टा का प्रश्न था। মহাদেৱী বৰ্মাই মেকুৰী পুহিছিল কিহৰ কাৰণে, যাতে এন্দুৰ ধৰিব পাৰে, কিন্তু সেই চিত্ৰা যে আছিল এন্দুৰক কেতিয়াও আক্ৰমণ কৰা নাছিল। কিন্তু দুটা অপৰিচিত চৰাইৰ পোৱালি যেতিয়া দেখিব তেতিয়া হয়তো কিবা নহয় কিবা কৰিব পাৰে, এইটো মহাদেৱী বৰ্মাজীয়ে ধাৰণা কৰি লৈছিল। उसके लिए दरवाज़ा बंद रहे और ये दोनों उसकी दृष्टि में एरे गेरे मेरी मेज़ को अपना सिंहासन बना ले। यहाँ स्थिति चित्रा जैसी अभिमानिनी मर्जारी के लिए असह्य ही कही जाएगी। চিত্ৰা অৰ্থাৎ মেকুৰীটোৱে ইমান দিনৰ পৰা মহাদেৱী বৰ্মাজীৰ ঘৰত আছে, পালিত হৈ আছে, কিন্তু সেই চিত্ৰাই কেতিয়াও মহাদেৱী বৰ্মাৰ মূৰৰ ওপৰত উঠা নাই। কিন্তু যেতিয়া সেই চিত্ৰাই দেখিব যে ময়ূৰৰ পোৱালি দুটা মহাদেৱী বৰ্মাৰ মূৰৰ ওপৰত বহিছে, তেতিয়া হয়তো তেওঁৰ সহ্য নহ'ব। এই কথাটো মহাদেৱী বৰ্মাই ভালভাৱে জানিছিল। ইয়াত কিছুমান প্ৰশ্ন ৰৈ গ'ল, যেনেকুৱা প্ৰথম ইয়াত प्रश्न আহিব পাৰে যে महादेवी वर्मा जी ने ड्राइवर को किस ओर चलने का आदेश दिया था। उत्तर तो होगा महादेवी वर्मा जी ने ड्राइवर को चिड़िया बेचने वाले दुकान की ओर जाने का आदेश दिया था। और एटा प्रश्न আহিব পাৰে ইয়াত, बारे मियाँ कौन है। उत्तर तो होगा बारे मियाँ चिड़िया बेचने वाले दुकानदार है। और एटा प्रश्न আছে चिरीमार कहाँ के रहने वाले थे। उत्तर तो होगा चिरीमार शंकरगढ़ के रहने वाले थे। और एटा प्रश्न हो पारे मोर के पंजे से क्या बनता है, क्या बनती है। मोर के पंजों से क्या बनती है। उत्तर तो होगा मोर के पंजों से दवा बनती है। ইয়াত এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কিছুমান প্ৰশ্ন আছে, যিকি নহওক প্ৰশ্নবিলাক
লগতে উত্তৰবিলাক ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত হয়তো দি দিয়া যাব। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़ियाखाने के रूप में होने लगा तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया जो मेरे सामान्य निवास है। जेतिया मोर थका कोठालीটো চিৰিয়াখানাৰ নিচিনা হৈ গৈছিল তেতিয়া মই কি কৰিছিলোঁ, খুব কষ্টৰে সৈতে দুটা পোৱালিক ধৰি মোৰ যিটো জালি ঘৰ আছে সেই জালি ঘৰত, ডাঙৰ এটা জালি ঘৰ আছে, সেই জালি ঘৰত থৈ দিছিলোঁ। दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कौतूहल जगाया जैसे नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। যেতিয়া ময়ূৰ আৰু ময়ূৰীৰ পোৱালিটো মৰা চৰাইৰ পোৱালি দুটা জালি ঘৰত লৈ গৈছিল মহাদেৱী বৰ্মাজীয়ে আৰু ৰাখি দিছিল, তেতিয়া বাকী যিবিলাক জীৱ জন্তু আছে বা চৰাই চিৰিকটি আছে তেওঁলোকৰ মাজত এনেকুৱা এটা প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা গৈছিল বা এনেকুৱা ভাৱ দেখা গৈছিল, এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ দেখা গৈছিল যে এনে নতুন এটা বোৱাৰীয়ে ঘৰত গ'লে সেই বোৱাৰীজনীয়ে ঘৰখনত কেনেকুৱা অনুভৱ কৰে, যে কোনফালে বা কি আছে, কোনে বা মোৰ কি হয়, এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি লাজতে যেনেকুৱা হৈ থাকে সেই ময়ূৰ আৰু ময়ূৰীৰ পোৱালি দুটাই লাজতে তেনেকুৱা হৈ আছিল। বাকী যিবিলাক জীৱ জন্তু আৰু চৰাই চিৰিকটি আছে সেইবিলাক কেনেকুৱা কৰি আছে ইয়াত দিছে। लक्का कबूतर नाच नाच कर दौड़ पड़े और उनके चारों और घूम घूम कर गुटुरगु की रागिनी आलापने लगे। लक्का कबूतर जी आसिल সেই कबूतरे কি কৰিলে, নাচিবলৈ এৰি দি চাৰিওফালে ঘূৰি ফুৰিছিল আৰু ঘূৰি 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 কি কৰিছিল, ৰাগিনী মানে যিটো শব্দ সুৰ, সেই সুৰটো আছিল গুটুৰগু কৰিবলৈ ধৰিলে। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। আৰু যিটো ডাঙৰ খৰগোশ আছিল সেই ডাঙৰ খৰগোশটো সভাত যেনেকুৱা সভাপতি থাকে সকলোবিলাক শুনে মনোযোগেৰে, ঠিক তেনেকুৱা ডাঙৰ খৰগোশটো কি আছিল, এটা এজন সভাপতিৰ নিচিনা খুব মনোযোগেৰে সকলোবিলাক নিৰীক্ষণ কৰি আছে, চাই আছে। उनकी गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। उनकी गेंद जैसे সেই ঊল সূতাৰ যিটো বলৰ নিচিনা ঠিক তেনেকুৱা খৰগোশটোৱে, সৰু খৰগোশটোৱে কি কৰি আছে, চাৰিওফালে জঁপিয়াই আছে, उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आँख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। তোতা মানে ভাটৌটোৱে কি কৰিছিল, এটা চকু বন্ধ কৰি খুব ভালকৈ আনটো চকুৰে চাই আছিল। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। আৰু সেইদিনা এনেকুৱা অনুভৱ হৈছিল মহাদেৱী বৰ্মাৰ যে চিৰিয়াঘৰটোত কি আৰম্ভ হৈছিল, ভূমিকম্প আৰম্ভ হৈ গৈছিল। ধীৰে ধীৰে दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। লাহে লাহে দুটা মৰা চৰাইৰ পোৱালি বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसा इल्ली से तितली की बनना। আৰু এনেকুৱাভাৱে লাহে 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 বাঢ়ি আছিল যেনে প্ৰজাপতিৰ সৰু ডিম্বৰ পৰা আৰম্ভ হৈ সম্পূৰ্ণ প্ৰজাপতিলৈকে যেনেকৈ লাহে লাহে ক্ৰম অনুসাৰে বাঢ়ে, ঠিক তেনেকৈ বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची तथा चमकीली हो गई। যিটো মৰা চৰাই আছিল কলগি, শিৰ কি কলগি, মূৰৰ ওপৰত যিটো থাকে, লগতে উচি তথা চমকিলি হৈ গৈ, ডাঙৰ হ'বলৈ ধৰিলে, ধীৰে ধীৰে বাঢ়িবলৈ ধৰিলে, লগতে চিকমিকিয়া হ'বলৈ ধৰিলে। চোচ অধিম বাংকিম और পেনি হৈ গৈ, চোচ মানে ঠোঁটবিলাক লাহে লাহে অলপ জঙা হ'বলৈ ধৰিল আৰু অলপ বেকা হ'বলৈ ধৰিল আৰু খুব সূক্ষ্ম হ'বলৈ ধৰিল, চোকা হ'বলৈ ধৰিল। आँखों में इंद्रनील की नीलाभ दूती झलकने लगी। और चकुर चारियोफाले खूब दूती देखिবলৈ পোৱা গ'ল। लंबी नील रही हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाही तरंगे उठने गिरने लगी। और যেতিয়া ৰ'দত যায় বা ৰ'দত নগ'লেও সেই চিকমিকিয়া ভাৱটো এতিয়া দেখা যায়, যেতিয়া চলা ফুৰা কৰে তেতিয়া তেনেকুৱা ভাৱটো দেখা যায়। दक्षिण बाम दोनों पंखों में सलेटी और सफ़ेद आलेखन स्पष्ट होने लगी। पूँछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे। পাখাবিলাকতো ঠিক তেনেকুৱা হ'বলৈ ধৰিল, যেনেকুৱা ৰামধেনুত বিভিন্ন ৰং থাকে, ধুনীয়া দেখা যায়, ঠিক তেনেকুৱা হ'বলৈ ধৰিল লাহে লাহে। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने
एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उसका गर्दन ऊंची और देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेरी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य का था उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। এই যে খোৱা কেনেকৈ লাহে লাহে এনেকৈ খাব লাগে, কেনেকৈ এনেকৈ বেকা হৈ চাব লাগে, কেনেকৈ লাহেকৈ ভৰিখন উঠাই খোজকাঢ়িব লাগে, কেনেকৈ পানীবিলাক খাব লাগে, কেনেকৈ শব্দবিলাক শুনিব লাগে, কেনেকৈ মাতিব লাগে, এই যে ভংগীবিলাক খুব এজন এক্সপাৰ্ট মানুহে, পাৰ্গত মানুহে যেনেকৈ কৰিব পাৰে ঠিক তেনেকৈ দেখুৱাবলৈ ধৰিলে। গতিকা চিত্ৰ নাহি আঁকা যা सकता। আৰু এইবিলাক আমি মুখেৰে মহাদেৱী বৰ্মাজীয়ে কৈছে আমি লিখি ক'ব নোৱাৰিম বা বুজাব নোৱাৰিম, কোনোবাই যদি চায় তেতিয়াহে ভালকৈ বুজিব পাৰিব। मौनिका विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाही गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्रलेखा, मंथर गति आदि से वो भी मोर की उपयुक्त सहचरणी होने का प्रमाण देने लगी। मोरनी माने मयूरीটো ইমান সোনকালে বাঢ়িব পৰা নাছিল, যিমান সোনকালে ময়ূৰটো বাঢ়িছিল, তথাপিও ইমানখিনি বাঢ়িছে যে ময়ূৰৰ কাৰণে তেওঁ যে সহচাৰিণী হ'ব পাৰিব এইটোৰ প্ৰমাণ দিছিল। नीलाभ के कारण मोर का नाम रखा गया, नीलकंठ और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। ডিঙিটো নীলা হোৱাৰ কাৰণে ময়ূৰটোৰ নাম দিয়া হৈছিল নীলকণ্ঠ। আৰু শ্ৰীকৃষ্ণৰ লগত ৰাধা যেনেকুৱা সকলো সময়তে আছিল, ছাৰ নিচিনা হৈ আছিল, ঠিক তেনেকৈ ময়ূৰৰ লগত ময়ূৰটো থকাৰ কাৰণে সেই ময়ূৰজনীৰ নাম ৰখা হ'ল राधा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। महादेवी बर्माई गमेই পোৱা নাই যে কেতিয়া নীলকণ্ঠ অৰ্থাৎ ময়ূৰটোৱে নিজকে সেই চিড়িয়াঘৰ মানে সেই জালিঘৰৰ যিবিলাক জীৱ জন্তু চৰাই চিৰিকটি আছে সকলোৰে কি বনাই লৈছে, নিজকে সংৰক্ষক লগতে সেনাপতি বনাই লৈছে। सवेरे ही वो सब खरगोश कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहाँ दाना दिया जाता है और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। रातिपुৱা উঠিয়ে সকলোকে একত্ৰিত কৰি লৈছিল আৰু সেই ঠাইত লৈ গৈছিল নীলকণ্ঠই য'ত মহাদেৱী বৰ্মাই খাবলৈ দিছিল, দানা দিছিল। আৰু নীলকণ্ঠই কি কৰিছিল, ঘূৰি ঘূৰি চাৰিওফালে ঘূৰি ঘূৰি সকলোকে দেখা শুনা কৰিছিল, দেখিছিল। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वो अपने तीखे चंचु प्रहार से उसे दंड देने दौड़ा। कोनोबाई यदि किबा बेमेजाली करिছিল सोनकाले गई तेओक दंड दिছিল बा शास्ति दिছিল। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था और जब तक वे आर्तक्रंदन न करने लगते उन्हें उधर में लटकाए रखता। जेतिया सरू खरगोशটোৱে किबा बेमेजाली करिছিল दौड़ी गई সেই খৰগোশটোক কাণত ঠোঁটেৰে কাণত ধৰি এনেকৈ ওলমাই ৰাখিছিল, যিমান সময়লৈকে চিঞৰ বাখৰ নকৰিছিল, কান্দা কাটি নকৰিছিল, সিমান সময়লৈকে উঠাই ৰাখিছিল। তো মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যিমান দূৰ পাঠ কৰি দিয়া হ'ল, চেপ্টাৰটো ডাঙৰ হোৱাৰ বাবে দুটা ভাগ কৰিব লগা হ'ল, পাৰ্ট 1 আৰু পাৰ্ট 2। পাৰ্ট 1টো ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ আৰু পাৰ্ট 2টো চাবা বুলি আশা কৰিলোঁ। পাৰ্ট 2 আৰু পাৰ্ট 1 দুটাই চাবা, তেন্তে ভালকৈ বুজি পাবা পাৰ্টটোৰ বিষয়ে। গতিকে আজি পাৰ্ট 1টো ইয়াতে শেষ হ'ল, পাৰ্ট 2টো নিশ্চয় চাবা। ধন্যবাদ।